Stop. Stop. Motherboard है वो तो पूरा motherboard लगी राजी हम दा भाई मतलब सब क्यों किया पखवा दाऊ ना करना टेक्नोलॉजी नंदा ने कमर वो दे दिया मां तो मसला ही है मत कर रहे हो ना तो मत कर पाओ है और ये reportito manga se ve de papel malo mata pata lagi kan legadet kami aku ini algo no perpan para ne zero bisa pada bajo no events bajo organize top project वो दोनों चीजों वेक्टर और वेक्टर के मतलब क्लासिकल तरीके para stop ना और अंत तक अगर अवार्ड the side of that is set converted from into stuff like मागते यो आइडिया वर्कर एक माने इसका कंट्रोल करने उपचार अब ये मन मेरे से नहीं कवले वो नहीं कवले तमाम da voi cara io per dire che devo pensare che non puoi dire per la e na ma che sta di giù o da zina ma da che sicuro mi fatto di pasport di dasmi roman baru nama gas sebawa sopan The 2 hours law.
غلط كده. No, de fuente la Claro. ما تبديل ولا مسألة يعني تدور ahorita voy a
Advanced International Institute for Research and Dialogue is a constituent part of International Islamic University. The IIT was established as a global center of excellence in Islamic studies to encourage critical interdisciplinary approaches to the study of contemporary Islamic thought, with the aim to provide open forum for creative work and candid scholarship on issues of contemporary concern. with particular emphasis on areas such as human rights, rule of law, pluralism, diversity, democracy, Islam, and the West. It aims to build interfaith dialogue and construct intra-religious relations and to inject multiple responses to religious extremism and violence. The main purpose of this institution is to initiate dialogue, to see the tolerance within the society. Drawing inspiration from fundamental values as articulated by the writings of Dr. Muhammad Iqbal, the IIT takes steps towards evolving a culture of peace, tolerance, and harmony in Pakistan and among the Muslim Ummah. In the recent years, the Institute invited researchers and scholars from all over the world in various disciplines and organized public lectures, panel discussions, conferences, workshops, and seminars. The IRD plays an incredibly important role in developing and constantly reminding the society at large. वो चल रही है जो वीडियो नहीं चल रही होती आईआरडी के बारे में इस्लामिक इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डायलॉग वो करा रहे हैं ना कि आईआरडी वाले वो है ना इस्लामी यूनिवर्सिटी आईआरडी से Distinguished members of today's panel, our worthy faculty members, and my very dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to today's seminar, Mapping Indigenous Pakistani Popular Genre. This is the first of a series of seminars that we will be holding under the umbrella of this AHRC-funded multinational project titled Muslim Women's Popular Fiction Network. This project was run by Dr. Anushka Kabul, who is the in charge Department of English Female Campus. She is the principal co-investigator and the node leader of this project in Pakistan. So the rationale behind today's seminar is that as members of the English department, we tend to focus more on Anglophone literature, and we have a rich and diverse body of literatures in our indigenous languages, which we tend to overlook in our department. So today what we have done is we have brought together a group of distinguished panelists who are investigating Anglophone literatures, but also those who are studying literature in our local languages.
And we hope that through this interaction, we will be able to build links and connections across disciplines, across languages, and across genres. And so hopefully we can fill this gap whereby English literature and students and faculty of English literature, they seem to be disconnected from our indigenous heritage and from. So we will begin today's session with recitation from the Holy Quran. For this purpose, I would like to invite Mr. Matiur Rahman to please come on stage and to recite a few verses. Mr. Matiur Rahman. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم. Today's event has been made possible due to the generosity of Iqbal International Institute for Research and Dialogue, and we'd really like to thank them for all their help. And I would like to invite Dr. Hussain Amin, who is the Executive Director of IRD, to please come and to deliver the welcome note. Maybe it's like I'm a cause of boredom as well. So thank you so much, Dr. Raman. I welcome Professor Dr. Safira Wang, who rector,
coming here is actually return of the native because he's one of our teachers and a very respectable, honorable researcher and scholar. Dr. Abdul Wajid Tabassum Sahib and Dr. Farooq Nadeem Sahib. So I welcome you on behalf of IRD in this seminar on mapping indigenous Pakistani popular genre. So I think it's one of those difficult words to pronounce. So on behalf of IRD, I congratulate Dr. Rusa Kawal, Dr. Aman, Dr. Asma Mansoor for organizing this activity here. I think we are glad collaborating with Faculty of Social Sciences and Languages and Literature in various academic activities, and that is what we are meant to be doing here in this university. For those of you who don't know about IRD, it's a think tank which is based in International Islamic University with a little bit autonomy here as well. And it is funded by the Higher Education Commission of Pakistan. But we do collaborate with civil society, with political parties as well, and with policy makers and even religious scholars and ulama and madaris, violent and non-violent both. So just few days back, we were in Jamia Muhammadi Sharif in Chenut, training 130 madrasa teachers who were there on ijtihad and reconstruction and these issues. And maybe a few days back, we will be just sitting in a very secular liberal gathering and discussing liberal interpretations of Islam, etc., etc. So I welcome you again here. Inshallah, I'm looking forward to a very good discussion and debate on this subject. Thank you. Thank you, sir. So today's session will be moderated by Dr. Arusa Kawal, and she will see direct the conversation, and I would like to invite her to please come to introduce the panelists and to begin the discussion. Thank you so much, first of all, Dr. Lameen, for taking time from your busy schedule to welcome our guests. I really appreciate it. And I really appreciate the way your entire team has been working to facilitate us to host this session. It is indeed a matter of great pleasure for me to host this session on mapping Indigenous Pakistani popular genre. As Amal pointed this out, that this is the first seminar of a series of events to be organized by Muslim Women's Popular Fiction Network, which is an arts and humanities UK-based project, which aims to connect with researchers across the globe and create local nodes in Turkey, the UK, Pakistan, Hong Kong, and the USA. This is an international network of researchers, authors, translators, and practitioners with a shared aim of casting light on the plurality and diversity of Muslim women's popular and genre writing. Our aim is to include more voices, a holistic picture of Muslim women's literary experiences, to facilitate dialogue between local and diasporic scholars of popular genre, and to decenter Europe and North America by forging connections with scholars in other parts of the world. We will work with educators and practitioners to generate best practices and pedagogical tools and approaches to teaching literature by Muslim women by developing and disseminating decolonized teaching resources and reading lists. Equally, it is rare that researchers working on Anglophone literature will collaborate with those researching literatures in Arabic and other local languages in the subcontinent, Middle East, or Arab world. So the dual local global focus of this network is aimed at breaking apart disciplinary and linguistic silos by bringing disparate researchers and groups together to produce innovative and important outputs and resources that will benefit both local research groups and global research community. And this nexus between the five video recorded.
will culminate in academic activities such as publication of research articles by one of the most prestigious journals, Vasafari, an anthology on Pakistani speculative literature, which I'm co-editing with Claire Chambers, a co-authored book published by Manchester University Press, development of a website gathering reading list and syllabus material for members of 5 local nodes, introducing new course modules for MS and PhD students at IIUI. And the project also involves international collaboration through teaching. I know that we're all looking forward to this exciting discussion on Pakistani Indigenous speculative literature. So without further delay, let me introduce my worthy panelists. Our first panelist is, who is unfortunately unable to join us today in person, is Dr. Najiba Arif, who's a writer, original thinker, with a broad range of publications to her credit. She has been the chairperson, Department of Urdu, student advisor, and is currently Dean FLL, International Islamic University. With at least 7 books to her credit in editorial and editorial capacity, Dr. Najiba Arif is the co-editor of Mayar, the biannual research journal of International Islamic University. She's also the guest editor of Bunyad, the Journal of Urdu Studies, Lahore University of Management Sciences. She's also been Charles Wallace Research Fellow at SOAS, the University of London, with an illustrious academic career throughout her work. Mani Siddada has also won Kerala Urdu Fiction Non-Fiction Prize. The papers are published in notable journals, including Journal of Indology and South Asian Studies, Asiatic, Bunyad, Tehqiq, and Baldia. Her fiction and memoirs have been published by Academy of Letters. Our second panelist is Professor Muhammad Zafir Awan, pro-rector. 24 years of experience in teaching, research, teachers training, and curriculum development. Since March 2016, he has been working as Dean Faculty of Languages and now Dean Faculty of Arts and Humanities at National University of Modern Languages, Islamabad. Earlier, he has worked at Area Studies Center, Qadian University, Islamabad, and International Islamic University. He has served various committees of Higher Education Commission, Pakistan, including National Curriculum Revision Committee for English as its chair. He sits on academic councils and boards in a number of universities in Pakistan. His research work has been published and cited in both national and international journals. So far, he has supervised 27 PhD cases, 2 full pieces in English and Urdu studies, including a number of research projects in translation from Urdu to English and vice versa. Recently, the Pakistan Academy of Letters has published its translation of Mustansar Hussain Tarar's celebrated Urdu novel Bahau as Sorrows of Necessity. Our next panelist is Dr. Abdul Wajid. He's an assistant professor in the Department of Pakistani Languages, Allama Iqbal University, Islamabad. He's an author of various books that include Sir Sayyid Ke Muntakhab Mazameen, Urdu Ghazal Mein Munasir, Fitras Ke Mazameen, and Hazara Ke Hind Ko Log Geet. Dr. Wajid has also worked as a consultant member on Hind Ko Brahmo for Center for Advanced Study of Language, the University of Maryland, Chicago, USA. He has many research articles to his credit. And next we have Dr. Farooq Nadeem. He's a lecturer in English at International Islamic University, Islamabad. He has authored a book entitled Fiction, Discourse, and Cultural Spatiality in Urdu. The book is considered to be an admirable contribution to the ongoing discussions in contemporary literature. Dr. Nadeem's short stories have also been published in various literary magazines in Pakistan and India. In a couple of minutes. She's in charge of the Department of Urdu Penal Campus, IIUI. She has written extensively on women's domestic journals and fiction of 19th and 20th century, as well as on female Sufi poets from Indo-Pak, Afghanistan, and Central Asia. She's particularly interested in appropriating and grounding post-colonial and postmodern theory
with reference to Urdu literature and the Pakistani context. I think that Dr. Najeeba couldn't join us in person due to her other research engagements in Karachi. She's presenting a paper in one of the conferences, but she has very kindly shared her views about the topic and this seminar. So let's listen to what she has to say. So can we have her recording, please? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भरोसा की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस अहम मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक होने और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। मैं माज़ूर ख़्वाही हूँ कि एक और कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं इस कॉन्फ्रेंस में बजाते खुद शरीक नहीं हो सकी, लेकिन आवाज़ के ज़रिए मैं ज़रूर शरीक हूँ और ये कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहम मौजू पर मुनक़िद हो रही है, पॉपुलर लिटरेचर के हवाले से। उर्दू में इसके लिए पॉपुलर लिटरेचर के लिए मकबूल आम अदब की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू भी मकबूल आम अदब के गिर्द होता है, मगर इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में पैदा हुए और जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हम अदब की एक खास किस्म के लिए मकबूल आम अदब की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो गोया इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस खास किस्म के सिवा अदब की दूसरी अक़साम यानी वो दूसरी किस्म जिसे अदब आलिया कहा जाता है मकबूल आम नहीं है, यानी पॉपुलर नहीं है। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि मकबूल आम से मुराद क्या है। मुख्तलिफ जो तारीफें की गई हैं पॉपुलर लिटरेचर या मकबूल आम अदब की, उनसे जो बात अक्स होती है वो तो यही है कि मकबूल आम अदब से मुराद वो अदब है जो अवामुन नास में मकबूल होता है, जिसमें तहजीबी और सकाफती सतह पर मुसल्लमात समझे जाने वाले ख्यालात को तक़वीयत दी जाती है, यानी जिसमें कंफॉर्मिटी होती है, जो अवामी जज्बात को मुतहर्रिक करने की सलाहियत रखता है और जो किसी समाज की गैर मुतनाज़े अक़दार की पैरवी पर यकीन रखता है और इन्हराफी और बाग़ियाना रवैयों से गुरेज करता है। जैसा मैंने पहले कहा कि कंफॉर्मिटी जिसमें ज़्यादा होती है और निज़ाम पैदा करने वाले सवाल नहीं उठाता। इसी तरह एक और अहम पहलू मकबूल आम अदब का ये भी है कि ये मसरत अंगेज़ी और खुश वक्ती का बाइस होता है और उसका ज़रिया बनता है, और इसका मुखातिब समाज का वो तबका होता है जो जिंदगी को ज़हनी सतह की बजाय अमली सतह पर गुजारने का कायल होता है और इस अदब को या पॉपुलर अदब को वो अपनी ज़हनी तफरीक पढ़ता है। इससे कोई बड़ा पैगाम हासिल करना या कुछ सीखना उससे मुराद नहीं होता। अगर हम मकबूल आम या पॉपुलर की इस्तिलाह के ये मानी तस्लीम कर लिए जाएं तो इससे लाजमी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि वो अदब जो मकबूल आम के जुमरे में नहीं आता और जिसे अदब आलिया कहा जाता है उसका मुखातिब कौन होता है। अगर अवाम नहीं तो फिर अदब आलिया किसके लिए लिखा जाता है। फौरी तौर पर हम इसका जवाब यूं दे सकते हैं कि अदब आलिया एक खास किस्म के तरबियत याफ्ता जहन से मामला करता है, एक ऐसा तरबियत याफ्ता जहन जो अदब के फनी लवाजिम से शऊरी तौर पर वाकिफ हो, उन्हें पहचानता हो और उनसे लुत्फानंदोज होने की सलाहियत रखता हो, खाली सलाहियत उसमें फितरी तौर पर मौजूद हो या उसने तरबियत से हासिल की हो। यानी एक किस्म तो अदब की वो है जो अवाम को अच्छी लगती है और दूसरी किस्म वो है जो खवास को खुश आती है, लेकिन इस किस्म की तबकाती तकसीम से ये मामला आसानी से हल नहीं हो जाता, इसलिए कि अदब आलिया के ऐसे मुकम्मल और मुसद्दिका नमूने भी हमारे सामने मौजूद हैं जिन्हें अवाम और खवास दोनों में यकसा पजीराई हासिल होती है। हालांकि उनमें वो सब खूबियां पाई जाती हैं जो अभी हमने अवामी अदब या मकबूल आम अदब के हवाले से गिनवाई हैं, और वो खूबियां भी पाई जाती हैं जो अदब आलिया के हवाले से जरूरी समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पर हिकायात सादी, रूमी के इकबाल के अशार, हीर वारिस शाह, बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद की अबियात, कलीला और दमना की कहानियां, इलियड और ओडिसी से माखूज दास्तानें जो हमारे यहाँ बहुत मारूफ हैं, अल्फ लैला और तलिस्मे होशरुबा के किस्से, और ये वो चीजें हैं जो इंसान के इज्तिमाई लाशऊर की दास्तान सुना
सब चीजों को हम किस जुमरे में रखेंगे? क्या हम इन्हें मकबूल आम अदब समझेंगे क्योंकि ये अवाम में मारूफ है, या हम इन्हें अदब आलिया ही समझेंगे जैसा कि वो है? ये जो सवाल है ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और खास तौर पर इसमें हमें ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि जिस चीज को हम मकबूल आम अदब कह रहे हैं या पॉपुलर लिटरेचर कह रहे हैं, इसके लिए कोई और इस्तिलाह वज़ा करनी चाहिए ताकि इससे मुतजाद जो चीज है उसको हम गैर मकबूल आम समझने पर मजबूर ना हो जाए। अंग्रेजी में भी अगर हम देखते हैं तो पॉपुलर लिटरेचर के मानी ज्यादातर यही रहे हैं कि जो अवाम से मुताबिक है, जो आसानी से समझ में आ जाता है। 20वीं सदी के आखिर में अवाम के मुकाबले में, अवाम के अदब को खवास के अदब के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता था, और इसके लिए पॉपुलर लिटरेचर की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाने लगी। और हम देखते हैं कि अंग्रेजी में इसकी सबसे जो अहम सिंफ है वो फिक्शन है। उर्दू में इसके लिए जो इस्तेलाह मकबूल आम की इस्तेमाल की गई है वो फिक्शन के उन नमूनों पर लागू होती है जो डाइजेस्टों में शाया होते हैं, जो ज़राए इब्लाग के मुख्तलिफ जरियों से नशर होते हैं, या ऐसे किस्से, कहानियां, जासूसी, रूमानी, सियासी और माशरती मौज़ूआत पर लिखे गए नावल या ड्रामे, और उमूमी दिलचस्पी से ताल्लुक रखने वाली ऐसी किताबें जो ज्यादा तादाद में फरोख्त होती हैं, और इस ज्यादा तादाद में फरोख्त होने के बायस बेस्ट सेलर का दर्जा भी हासिल करती हैं, और फिर उनके दरमियान बेस्ट सेलर होने की बिना पर आपस में मुकाबला भी होता है, और वो अपने नाशरीन के लिए और अपने मुसन्निफीन के लिए माली मंफियत का बायस भी बनते हैं। इसके मुकाबले में जिसे हम अदब वो अपनी माली इफादियत के एतबार से अक्सर बिल्कुल बेकार होता है। पाकिस्तान में हम किताबें ज्यादा से ज्यादा 500 की तादाद में छपती है, उनकी दूसरे एडिशन की नौबत आती है। 20-25 बरस पहले तक तो ये किताबें कुछ खरीद लें। जो रिवायत है जिसका डॉक्टर ने अपने सवालात में जिक्र भी किया है, ये बहुत अहम है। इसको हम पॉपुलर लिटरेचर में शुमार करें या ना करें, बल्कि मैं समझती हूँ कि इसको हमें पॉपुलर लिटरेचर की इस्तिलाह के तहत नहीं समझा जा सकता। इस लोक अदब को, इस ज़बानी रिवायत को, ये एक बिल्कुल तीसरी चीज है जो अदब आलिया और पॉपुलर लिटरेचर की इस्तिलाहात में दोनों से अलग है। इसलिए कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा बहुत से खजाने मौजूद हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में हैं, आखिरी जमानों से गुजर रहे हैं, जो इस खजाने के अमीन हैं, जिनके सीनों में ये कहानियां, ये गीत, ये टप्पे, ये ढोले, ये माही छुपे हुए हैं। और हमारी नस्ल अगर इस हवाले से कुछ करना चाहती है, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर करे, चाहे वो अपने शौक से करे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करे, अपने मकाले के तौर पर करे, तो एक बहुत बड़ी और अहम कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि हम इस रिवायत को महफूज करने की कोशिश करें। और इस वक्त हमारे पास ऐसे मुफीद आलात मौजूद हैं। ये एक आला तो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं, और जिससे बगैर किसी कोशिश के, हम बगैर किसी ज्यादा मेहनत के, हम ना सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम बहुत आसानी से अपने अपने घरों में, अपने अपने खानदान में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने गिरदोपेश में ऐसे लोगों की निशानदेही कर सकते हैं जिन्हें कोई कहानी, कोई पहेली, कोई नज्म, कोई गीत याद है, चाहे वो कोई लोरी है, चाहे वो बच्चों को की तरबियत के लिए सुनाई जाने वाली मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों की नज़में हैं, उनको कहीं वीडियो या ऑडियो की सूरत में महफूज करें। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने कोशिश की है,
और शोबा उर्दू में जब मैं थी तो मैंने एक तालिब इल्म के लिए ये PhD का ये मौजू उसकी मुशावरत से और उसकी रजामंदी से उसे दिया था कि वो एक खास इलाके की लोक रिवायात को जमा करें, नीली बार और गंजी बार के इलाके की जहाँ की वो रहने वाली है। और जमा करने का तरीका ये होगा कि वो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, फिर उसको लिखेगी उस जबान में, फिर उसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे और फिर उसका तजज़िया करेंगे। और वो अगर मुझे यकीन है वो काम इस वक्त जारी है, मंजूर हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि वो काम जब सामने आएगा तो बहुत अहम एक काम होगा। और इस तरह का काम, ये तो एक कपड़े और एक जर्रे की बात है, इस तरह का काम हर जगह और बार बार बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमें यूनिवर्सिटियों में भी अपने तालिब इल्मों को इस तरफ आमादा करना चाहिए कि वो हमारी ओरल ट्रेडिशन को महफूज कर सकें, और यही असल काम है। हम इसे पॉपुलर लिटरेचर की निस्बी तारीफ के तहत ला सकते हैं या नहीं ला सकते, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो इज्तिमाई दानिश है जो हमारी कौम की सदियों के तजुर्बात का हासिल है। और इस इज्तिमाई दानिश से महरूम हो जाना पूरी इंसानियत को जिंदगी के एक बहुत बड़े तजुर्बे से महरूम कर देने वाली बात है। तो हमारे लिए ये बात बहुत अहम है, और इसी हवाले से इस कॉन्फ्रेंस की भी अहमियत है कि अगर इस हॉल में बैठे हुए बहुत से लोगों में से चंद एक लोग भी इस बात की अहमियत को समझें कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के सीनों में छुपी हुई उन ज़बानी रिवायात को लिखने की कोशिश करें, और ना सिर्फ लिखें बल्कि रिकॉर्ड भी करें, ताकि उनकी आवाज़, लबो लहजा, ज़बान, उसके मुख्तलिफ आहंग, वो तलफ़ुज़, हर चीज़ महफूज हो जाए। तो ना सिर्फ वो ऑडियो वीडियो का एक ज़ख़ीरा बन सकता है, बल्कि तहरीरी सूरत में भी आकर उसको महफूज किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा इक़दाम होगा, और मुझे यकीन है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में और डॉक्टर रूसा की इस रिसर्च के बाद, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे ही फैकल्टी से, आपकी अंग्रेजी के शोबे से डॉक्टर शिराज भी इस मौजू पर बहुत उम्दा रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी से एक तरह से ये एक तहरीक उठे जो हमारी ओरल ट्रेडिशन की हिफाजत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। Has joined us. I request her to please join us on the stage. So we are going to keep this session interactive and bilingual, so that the students and the colleagues who are joining from the Department of Urdu can also sort of, participate, in this discussion without any hesitation. Dr. Najiba, towards the end of her, recorded note, has actually, highlighted the need to preserve the oral tradition and the folk tales. Which actually, reminds me of what a Canadian writer, Sherry Devlin, has said, that there is a big push now, for telling of Indigenous stories. And because the only way, according to him, that I can know myself or what my community is and the ways in which we survive and adapt is through telling of this story. Now, interestingly, post 9/11, there has been a boom of Pakistani Anglophone speculative literature. And because for many writers of popular genre, speculative settings allow them to reimagine the native experience in ways that is not possible in realist fiction. Now, I was just wondering that as compared to Pakistani Anglophone speculative literary tradition, we don't see much of Urdu or indigenous, speculative writing, whether we're talking about Sindhi or Pashto or Punjabi, and so many other, languages. So
So now this is my question to most of the panelists or all the panelists, that what do you think, what are the reasons of this relative neglect of indigenous Pakistani popular genre within the subcontinent? So I would like to request first Dr. Zafir to share his views on the question. Thank you very much, Dr. Rusa. First of all, I am grateful to you and IRD for inviting me. I am a sort of product, if not a proud product of this university and this very campus, old campus of Islamic University, where I started my teaching and research journey in 1995, when I think most of you were still in Malamere. You know, when one's life is measured in decades, and one sees, since I'm living for the last half century in this world, that's why I measure my life in decades, and when I see young faces, young people, aspiring researchers, and would be, and in some cases could be PhD researchers, I feel very heartening. The situation is heartening for me that such very important questions are raised by a very important department. Nowadays, in my own university, now my university where I'm serving, the one question is often raised: what is the social relevance and the market relevance of humanities and English studies in particular? So often I have to struggle with my colleagues there, particularly who are in the policy making chairs. I have to argue with them that why English studies and humanities in general are so very relevant and so very significant, important for the soul of Pakistan. Whatever happens in our society sometimes, that is so disturbing that sometimes one feels that we could stop them and we could reclaim, our narratives that have been hijacked by some, extremist thoughts. So when I came to know this project of Dr. Rusa Kamul and her team, believe me, I was very much heartened by this idea, because I believe that these popular narratives in any form, whether they are told by our grandmothers and our grandfathers, or they are written down in some cases, some of them are documented as well, but of course not in a very systematic way, as Dr. Rusa has rightly pointed out, particularly in our regional languages or other Pakistani languages, since they don't like to be called regional, therefore we call them other Pakistani languages. So in their literature, which is usually, it remains hidden from the so-called mainstream, literary and mainstream media and academia both. Pakistan Academy of Letters, as most of you know, is has been trying and still trying in a bureaucratic fashion, should I say, to highlight and to bring into light the achievements of some of those writers who are writing from different regional locations of Pakistan. And some of those literary pieces in various forms, literary forms, are also translated and made available to the larger international and national readers, particularly those who want to see these things in English or in Urdu with translation. But unfortunately, most of the time, all of that remains just a fodder for the researchers who want to earn their degrees in MPhil and PhD, and then go into the same rigmarole of teaching. They don't, bring about any sort of cultural change in Pakistan. Because let me here briefly, with your permission, talk about the political economy of teaching
English literature or English narrative, whether they are popular, whether they are elitist, whether they are classic. What is their political economy? I mean, just imagine one phenomenon which you can call Harry Potter phenomenon. At first time in human history, a school teacher, J.K. Rowling, became the richest writer of the world just by virtue of a novel or series of novels, and then that was translated and adapted for the other forms to media and for Hollywood, cinema, and so on. And then on the basis of that, other forms of economy started. That is, our children now carry paper files where Harry Potter's pictures are there. We have, tea and mugs where Harry Potter is. So a lot of economy is involved in the writing and in the spreading and in the dissemination of such literature, such popular genre, you can say. So it's not very simple, it's not innocent. Of course, she has become the richest, but all of that, those riches, where have they gone? They have gone back to her country. So there, where she is keeping her money, and she is taking, paying taxes to her government, and in this way, she is contributing by virtue of her mind only. She is contributing to the economy of. So where are we in this? When our they discuss that English studies is irrelevant, and it is doing nothing but producing more of the same. That I'm teacher, I'm producing mostly teachers. All of you would be, earning degrees from this institution. You would try to come back to your teachers, your HODs and coordinators, asking for 2 or 3 courses on visiting basis, or you would ask to have a permanent position in the same department. This is where when such projects are conceived, this is where we can also give our potential input, and we can show that narratives are important. When narratives are hijacked by the extremists, I mean, look at just one man who is having so much following on the social media, on the Facebook and YouTube. And he, even after his death, is in the public imagination so that he has literally millions of followers who, whenever they have the chance, to block our roads and cripple our lives and cripple our minds also. So we are more intelligent, are more creative, are more educated. We can realize the importance of popular narrative. For example, by and by, I will talk about how we can. Popular fiction. Omega, I was just wondering, do you think that the popular languages have the capacity to rethink or imagine indigenous futures and dreams in a new framework? What has been your reading of our local इसमें मैंने ये कहना चाहूँगी कि और हमारा फोक लिटरेचर और हमारा पॉपुलर लिटरेचर राजस्थान की शब्द भी है, शब्द भी है, फोक टेल्स हैं, हमारे लव टेल्स हैं, उनके अंदर अब यहाँ पर उर्दू को फोक करना चाहिए जब हम उर्दू की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें आपकी मकामियत मुझे बहुत कम नजर आती है और वहाँ पर वो स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स इस तरह से बिल्ड किए गए इन अ वेरी इनिशियल स्टेजेस जब नॉवेल लिखा जा रहा है तो उस वक्त भी 105% वो नजर आते हैं ये उन कैरेक्टर्स के सामने जो नसीब उर्दू के शब्द में है राजा के शब्द में है वो
लेकिन हमारे पूरे लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में इस चीज का रिवाइवल हुआ है बाद में फैमिली क्लास नाइफ के शब्द में दोबारा से औरत के बारे में एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीथिंक किया गया और उसको उसके माइंड क्रिटिसिज्म या उसके ऊपर रिसर्च भी हुई और उनका करेक्टर ही एक्सप्लोर करने की मेरा भूमि के शक्ल में किरदार है या अच्छा है तो वो फिर अकबरी की शक्ल में अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो एक पूरा जिस्म है वो तो मौजूद है शायद कहानियों में भी शायद लेकिन वहाँ से जाकर या बल्कि वो किस तरह से हुआ कि हमने उसमें जो एक अडॉप्ट करते हुए रिवायत का ऐसे हिस्सा बनाया, वो रिवायत आगे बढ़ी पोएट्री की या नॉवेल की या कहानी की हम किरदार ऐसे हैं तो उर्दू के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, बिल्कुल है, जिसके अंदर फोकलोर के साथ फोकलोर एक्चुअली आपका पूरा कॉन्शियसनेस एक पूरा जो किसी भी इलाके के अंदर मौजूद है। फोकलोर एक ऐसी चीज है जिसमें आप एग्री करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अपनी इज्जत और अपनी पूरी औरत अपनी जुबानी चाहे वो साउथ एंड की तलाश की चाहे राजा ये आपको कोई रिपीटियंस जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें फिर पंजाबी को और अपनी जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जब उसका परेशान करता है तो वो दोबारा से इस तरफ जो रजू करता है उससे करने की कोशिश करता है, गलतफहमी दूर होने की बुनियाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। टूट गया वो दोबारा से और वो खुद को आग के हवाले तो करती है मगर दोबारा से सेटलमेंट की तरफ नहीं जाती। तो अब ये पूरे किसी भी मुल्क के ऐसा स्ट्रॉन्ग किरदार हमें नजर नहीं आता। शुरू में जो लड़ाई शक्लें उसमें मजलूम औरत का किरदार है, उसमें उनके राइट्स के नाम बाद में 1936 में फिर औरत के जिस तरह से राइट हो रहा है उसमें फिर औरत को कहीं ना कहीं लेकिन अब पुराने जो उनके ऊपर स्टडीज होनी चाहिए और उनको उसके लिसानी और जितने भी उनके इलाकाई तनाज़ात हैं उनके साथ अक्सर अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी टोटली बदल सकते हैं, लेकिन वो सारा जो है वो आपको दोबारा से अगर आप अपने किरदार लाना चाहते हैं, जिंदा किरदार लाना चाहते हैं फिक्शन में, पोएट्री में, तो आपको वही अपने किरदारों के साथ दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। आपके इलाके की बिल्डिंग होने वाले कैरेक्टर्स हैं वो बॉर्डर कैरेक्टर्स नहीं है। तलब चाह रही थी ना कि ना यहाँ पे कोई फीमेल्स का लागू होती और उन्होंने ऐसा जैसे 1000 साल पहले राजा खुदारी जो अपने ब्लड से इस बात पर कुछ क्या आशार के विद्यार्थी में भी वो 1000 साल पहले से उसको दोबारा से और उससे एक सिंधी तहरीक को एक निगाह मिली कि ये सिर्फ इसमें जो औरत के साथ सूरत है वो क्लास के ऊपर बेस नहीं करती, बल्कि मैं उसके वो जो बच्ची का अपना बैकग्राउंड है वो शहजादी गवर्नमेंट की बेटी में आबादी दौर में, तो अगर वो कारी हो सकती है तो फिर जो उनके अंदर
तो औरत की जो विक्टिमाइजेशन है वो क्लास के साथ मैटर नहीं करती इस थ्योरी को बिल्ड करने के लिए उन्हें राजा और गाड़ी के शायर की तरह वापस लौटना पड़ा मुझे भी इस्तेफादा करने का मौका मिला करने की कोशिश की लेकिन बुनियादी तौर पर उनका जो बुनियादी काम है पहला राज का है कि उन्होंने अपनी उर्दू दुनिया के साथ ऐसे खत्म होते हुए किरदार जो हमारी लाशोर में से भी शायद अब मिलते जा रहे हैं उसने उनके साथ हमें दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की फातिमा के बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन हैं और आप लोग की कहानियां जब पढ़ते हैं तो उनमें बहुत शानदार किरदार हैं बाकी के साथ मैरिज की बात थी कि जितने हमें स्ट्रॉन्ग एजेंटिक एम्पावर्ड वुमेन कैरेक्टर जो हैं वो अपनी फोक टेल्स में मिलते हैं वो प्रॉब्लली हमें इतने रेयर एक्सपेक्शन में नहीं मिलते हैं जिस चीज के उसके अंदर एक पोटेंशियल तो है बल्कि यही से बात आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर वाजिद से ये पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर वाजिद ये जो पॉपुलर फिक्शन है या जो भी जॉनर है वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो सका इंडिजिनस या रीजनल लैंग्वेजेस में व्हाई ओनली एंग्लोफोन लिटरेचर और क्या वजह आपको इसकी नजर आती है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बल्कि हमारी सोच रखें यहाँ पे आप सबका शुक्रिया तो ये मैडम कुछ बातें अभी तक जो हमारी चल रही थी मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हमारी डिस्कशन है ये तो असल में हमारे रियल टॉपिक पे आ जाए जिसकी कुछ चीज़ें हम ध्यान में बिठा दें कि किस तरह स्टूडेंट्स भी बैठे हैं उनके लिए भी हैं मेरे लिए भी हैं मैं खुद भी सीख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अब डॉक्टर नजीबा ने कुछ साहबा ने कुछ बातें की मकबूल आमद के हवाले से अब मेरे दाएं बाएं में आने में बैठे हैं पर बैठे हूँ मेरे पीछे बात ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप अदब की तारीफ करने निकलेंगे तो बहुत ही डिटेल है लिटरेचर अदब पहली बात तो ये है कि अदब या तो अदब है या अदब है ही नहीं ठीक है हर वो चीज़ जो लिखी जाएगी वो लिटरेचर होगा मैं इसकी तफसील में नहीं जाता मैं कुछ बातें पॉइंट्स वगैरह ताकि हमारी डिस्कशन करना रियल हमारे टॉपिक पर जो आ जाए अच्छा फिर वो कहा कि जी मकबूल अदब अगर मकबूल आम अदब है तो उसका मतलब है जो अदब आलिया है उसकी कोई हैसियत नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगा बल्कि बात ये है कि हर वो अदब कि जिसकी जुड़न अपनी जमीन के साथ है इकबाल ने कहा था बात दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है हम इकबाल को उस जमाने में भी पढ़ा करते थे कि जब हमें उसकी समझ नहीं आती थी ठीक है ना बात ये है कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक मजमून लिखा निरंगे ख्याल में बाद में पता चला कि ये तराजुम है शोहरत आम और बकाए दवाम मतलब किसी भी अदीब को शोहरत आम मिल गई तो क्या उसे हमेशगी भी मिल गई उसके अदब को दवामियत भी मिल गई मतलब हमारे सामने मिसाल है गालिब की मेरे साथ दोस्त मेरे इत्तेफाक करेंगे क्योंकि लिटरेचर के हैं गालिब को अपने जमाने में कभी वो शोहरत हासिल ही नहीं हुई मिर्जा कतील थे वो फारसी थे ईरानी निजात थे और गालिब के सामने उसका कोई नाम लेकर तो वो कहते थे वो उल्लू गागस यानी दोगला वो गालियां तक देने के लिए आ जाते थे वो उसी खुतूत में जिन्होंने वो लिखे हैं तो वो लेकिन गालिब की जो गजब थी अपने आयत के लिए नहीं थी या हर अदब अपने आयत के लिए नहीं होता हर अदब अपने आज देखिए गालिब को जो दवामियत मिली है इस तरह इकबाल को शोहरत आम भी मिली और बकाए दवाम भी मिली अंजुमन हिमायत इस्लाम के नाम अब मतलब ये होता है कि कौन सा अदब किस आयत में फिट इन होता है मतलब नजीर ने जब अपनी नज़्में लिखी मसलन सब लाज चलेगा जब सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बन जा रहा तो किस हवा को छोड़ दिया देश प्रदेश मेरे मारा कदा दिल का लूटी है दिन रात बजा कर नकारा क्या बदिया मेरा सब बैठ शुक्र क्या कोई किला सब बारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज क्या गेहूं चावल मोट वटर क्या आग हुआ अच्छा लोगों ने कहा मीर जैसे शायर ने अपने आयत के जो संजीदा गजल लिखने में इसका ये पोज वो है कि बकवास करता है ये जतनबाज है लेकिन जब अंग्रेजी आयत आया अंग्रेजों का जमाया डॉक्टर फैलन ने हिंदुस्तानी डिक्शनरी लिखी तो उसके दिवाजे में लिखा कि ये उर्दू का वाहिद शायर है कि जिसकी शायरी अहले निसाब के मुताबिक सच्ची और खरी है अच्छा बाद में हम देखते हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट आ गई और उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरह की हुआ तो लोगों ने उसकी नज़्में तलाश करनी अच्छा
अच्छा वो ऐड नज़्म का नहीं था, वो गजल का ऐड था। हर ऐड में अदब के तकाज़े जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। अब मतलब ये हमने देखना है वो अदब की जिसकी जुड़त जमीन के साथ होगी, जिसकी जुड़त जो बात दिल से निकलेगी, दिल पे। मतलब मैं अगर अपने आप को देखूं तो मतलब हमने बचपन से कागज की कहानियां पढ़ने जो वो शुरू की, या हमारा यार के किस्से जो वो पढ़ने शुरू किए, फिर थोड़ा सा और संजीदा हुए तो हमने सीरीज का एक सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे पास बच्चों को तो आजकल वो पता भी नहीं होगा वो से इब्न सभी के मदद करीम की सारी चीजें। अच्छा थोड़े से नौजवानी में आए तो रज़िया भट्ट के नाम जितने भी थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हम फराज पे आ गए। फराज जिस जमाने में हम जब तालिब इल्म थे इंटर के थे तो कोई मतलब जो फराज की किताब आई हमने पैसे तो होते नहीं थे, दाएं बाएं से किसी से लेके पढ़ना। उसके बाद हम देखते हैं फैज का जमाना आ गया। फैज की जब इतनी शोरा हुआ तो हमने फैज को पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद हमने देखा तो हम इकबाल पे आ गए। तो देख कहने से मुराद है कि हर दौर के तकाजे अपने अपने ऐड में बदलते रहते हैं। दूसरा जो मैडम ने कुछ बातें की खवातीन के हवाले से, अच्छा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इत्तेफाक से ये भी एक हफ्ते से जनरल स्टडीज में लेक्चर देती मैं भी देता हूँ। उसमें ये देखिए मसलन मेरे सामने मिसाल है, सैफो की मिसाल है यूनानी अदब में, इतनी बड़ी मिसाल है सैफो कि जिसकी सलाहियतों को प्लेटो जैसे शख्स ने भी तस्लीम किया। अच्छा मेरे सामने मिसाल है निगार बिन्त उस्मान की, खवातीन को औरत को अव्वलियत हासिल है। अच्छा अदब या औरत तख्लीक कर रही हो या मर्द तख्लीक कर रहा हो, देखिए जिक्र तो बुनियादी हवाला तो औरत का ही हुआ। देखिए अगर औरत तख्लीक कर रही है तो वो तो लाजमी सी बात है कि औरत की अपनी एक जो हैसियत है उसमें आएगी। अच्छा अगर मर्द भी तक मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब में, तो बुनियादी एक हवाला तो औरत ही है। देखिए उसके बाद आप देखें तो मेरे सामने निगार बिन्त उस्मान का तुर्की अलामा नियाज़ फतेहपुरी जब अपने रिसाले का आगाज करते हैं तो सबसे पहले निगार के नाम से इसने रिसाले का आगाज की, औरत को इतनी अहमियत जो होती। अच्छा फिर आप देखिए राबिया बिन्त काब का इन्होंने भी नाम दिया। अच्छा अगर आप यहूदी की शायरा में आ जाए ना, कागा सब तन खाइए, मीरा बाई का कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन किया। इस आप अगर सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में आ जाए, मतलब यहाँ पे सूफिया का बुरूद हुआ, सूफिया का आना जाना हुआ, मेरा हिंदी टेक्स्ट पे काम रहा है। अब सूफिया भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे मोहब्बत का इजहार औरत से मर्द की तरफ हो रहा है। औरत के क्यों कि जो बुनियादी हुस्न, जो बुनियादी नजाकत या बयान, क्योंकि औरत को जो तख्लीक फितरती तौर पर वलीयत कर दी गई है अदब के हवाले से। तो चुनांचे वो हम देखे सूफिया ने भी फिर इसी तरह किया। मसलन हम जो लोरियां हम सुनते थे या हमने जो माया सुना, पंजाबी में भी लिखा जा रहा है, हिंदुओं में भी लिखा जा रहा है, इसी से मिलता जुलता लोरी वहां पे भी लिखी जा रही है, बलोची में भी लोरी लिखी जा रही है, इसी तरह ज़ेरोफ लिखी जा रही है, बलोची अदब में जो वो लिखी जा रही है। तो कहने को मुराद ये है कि जो हमारे यहाँ औरत के जो तस्वुरात हैं या औरत को असल में हमारी बहुत सी चीजों से नाशनाई है, सीधी बात हो। नहीं तो 40 जिल्दों में डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने सिंधी लोक अदब को जमा किए, 40 जिल्दें सिंधी अदब की, इतना रिच लिटरेचर पाकिस्तानी जुबानों में। इसी तरह आप पंजाबी में देख रहे हैं, इसी तरह आप जो वो बलोची में देख रहे हैं, ब्राह्मी में देख रहे हैं, इसी तरह शुमाली पाकिस्तान की जो जुबानें बोली जाती हैं उनमें तो औरत एक बुनियादी जो हवाला है वो हमारे यहाँ जो वो मौजूद है, ठीक है। उसमें फिर आप आगे चल के देख लें, असल में जब आप प्रोग्रेसिव मूवमेंट में चले जाए या फिर आप बाकी जो हवाले आप देख लें तो उसमें हम इससे सर के नजर कर ही नहीं सकते। दूसरा अगर हमने कहानी पढ़नी शुरू की या हमने ज़रबुल मसल को पढ़ना शुरू किया तो मैंने ज्यादातर ज़रबुल मसल अपनी माँ से सुने। तो उसमें आप देखें मसलन अगर अदब की अव्वलीन जो हमारी कहते हैं जो रिवायत है जिसमें सुहागन 12 मासा की रिवायत हमारे यहाँ जो हो रही है, फिर लोरिया भी जो वो लिखी गई है, जो पुरानी हमारी क्लासिकल उर्दू का दक्कन में जो पीरियड है उसमें आप देख लें तो हमारे यहाँ बहुत ही रिच है, खास तौर पर जो हमारे यहाँ जो अदब का ये जो अदब का असरार जो हमारे यहाँ जो वो नजर आते हैं। उसके बाद आप मसलन हर ऐड है कि जैसे मसलन किसी ऐड में लखनऊ या दिल्ली के जमाने में गजल का ऐड बहुत ज्यादा था, फिर बाद में जब अंजुमन पंजाब आई तो नाज़िम का ऐड बहुत ज्यादा आ गया। उसके साथ साथ नावल भी पूरा एक सिलसिला में ज्यादा आप इस वक्त तशरीह नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए बल्कि अपने फरूख साहब की तरफ जाऊंगी।
Okay, Dr. Farooq, okay, Dr. Farooq, what do you think, what role colonialism played in the marginalization of these indigenous regions? Of course, you can always sort of, refer back to the previous questions and then respond to those questions in the light of this particular aspect, the role of colonialism within the subcontinent. Thank you very much, Ashtaba. I'm very happy to be part of this project. So, I grew up in a village where we used to have many stories about Satsipuru, Giranjan, Nanamaju, even some religious stories like Kalvara narratives, and then Kissa Yusuf Islam, we used to listen from both sides, from Nana as well as from Nani. So what happened, it's because of some paradigm shift that we need to know what was the nature of that paradigm shift. Because of this shift, Nana's Kahaniyas are almost preserved, but Nani's Kahani is missing. Yeah. If we happen to listen to Nani's Kahani, and if it's published somewhere, it's Nana who is telling Nani's Kahani. We have searched different stories in Punjabi, but so the writers are the compilers. Those people who have compiled and composed the book, they are basically by male side. Female side has not contributed to the evolution of though orally they are very much there. Their voice is there, very much there, but it's yet to be regarded. So this project is going to serve. I can't claim that it's completely it would be successful, but somehow it's a very good effort to preserve those stories that are particularly told by Nani, okay, or Dadi, right? I was telling you that I grew up in a village where we used to have the very first sentence that I uttered, many stories. The stories, but two or three things that are very special that have enriched my knowledge and my critical attitude. What was that? Folk theatre. I have watched, I have visited folk theatre. I know what was the nature of folk theatre. So that folk theatre was called Rahas. Yes. And it was also called Sang. In Punjabi, Sang means imitation. So what do you read in Aristotle's theory of imitation? It's a song. In Punjabi, Sang Lagana, Sang Lagana. Yeah, there's a book that is published by Lokrisa, and I don't think it's something invalid claim that the writer has made. But according to him, the definition of tragedy, which is the definition of imitation, which is propagated, which is introduced by both Plato and Aristotle, it has been borrowed, or it has been taken from Texel, because the stage plays, the plays which was staged here in Texla, these plays were also called song or swant. So song means in Punjabi or Sanskrit, Hindi, it means to mere sang la rahe. Yes. Yes, and it song हमेशा performance होती थी. For example, किसी का कोई ऐसे मुंह है वो तो पकड़ लेते हैं. Like a song. हमारे एक बुजुर्ग ने एक आदमी को वो हंसते भी इस तरह थे करके ना, वो पता नहीं चलता था कि वो हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. तो जो दरअसल स्टूडेंट्स है उसको ना, जो हमारे मोहल्ले के लड़के थे, तो एक दूसरे को ना, वो जब भी whenever they were trying to make fun of somebody or something, they used to say right. तो कहते कौन है, कहते उन्होंने उनका नाम they were performing. So secondly, another thing that happened that I was lucky enough to watch that was a play that was performed with full grandeur on the stage at that time. I was in 7th class grade at it.
तो वो था Sultana Daku. Sultana Daku was a historical character who was a Robin Hood of subcontinent, who used to plunder the elite and distribute the wealth among the poor. He was a freedom fighter. He fought against the British Empire and he was hanged till death. So this play was staged on that. So the other rest that I happened, but that was on the fall of Delhi, on mutiny. Uska still is one very meaningful sentence is still in my mind. Chadiyane Dilli Lutti Doperi Diva Bali. It is very, very meaningful sentence. Still that sentence, the song that those singers were singing at that time, it was very possible song at that. Means Chadiyane Dilli Lutti Doperi Diva Bali. It was very symbolic, very meaningful song at that. But how? In that village, we, males and females, in summer vacation, we would sit together and we would listen to these stories and we watch these plays. So gradually, all of us, somehow we were digitalized. How? The sage that we used to enjoy, it was now, it was conveyed to us through TV. And TV, it came to my village in 1990. Before that, everything was social, cultural, and traditional. But after that, we left our sage, our nani and dadi under that tree, and all of us were compartmentalized, and we were now focused on a digital Baba. Yes, a Baba who was speaking through some channel, and we were listening to them. And Hiranpur thought for all the old grandmas and grandpas, they died under those trees. They were alone, and we were gathered when we were gathering, and we were enjoying the discussions and different programs on TV channel. We were Chitrahar, we were watching Chitrahar, and we in Indian songs and Indian movies, and this is how market, and this is how capitalism in a way, this newness and this modernization of different ideas, it is responsible for the downfall or for ignoring our traditional folktale that used to be telltale culture. I call it telltale tradition. It was a wonderful culture. Everyone was having some story. In my village, there were two types of stories, like traditional stories. Another story that was also very important, we were listening and not enjoying, but we were very much interested to know the stories about partition. Yeah, stories about those. So these two types of stories were very popular, but everywhere, in every village, there was one story. So it was an age, you can say, it was an age of story, and it was an age of tale, it was an age of folk wisdom. But gradually, all of us, we were fixed through with, or we were branded with anything that was market oriented. It was a kind of metamorphosis, and we are having, all of us are somehow we are metamorphosed. So we are appropriated, and we are also transported to another world that's now we are enjoying and celebrating. So we need to preserve all those things which we have ignored. And anywhere, if you have some that Dr. Deepa has requested you, if you have some stories in your area, these stories, they must be recorded, they must be put to forth, because if we ignore these, who is going to, particularly students from English department, because they know they are, some people ask me, why have you written your book in Urdu? I have this answer, and that is very convincing argument for me at least, that most of our faculty members, that is, we has also highlighted this issue. All of us, the teachers and students,
So yeah. So people ask me, why have you talking Urdu? My answer is that this question is, means all of us are, not most, all of us are obsessed with we are working on different aspects of literature, of poetry, and different aspects of literature. So we are rising, we are interested in highlighting the terminology, the philosophical aspects. But whatever we are doing, it fails to all the universities. I mean, maximum what can happen, it could be the thesis could be placed in a shelf. Right. So, I mean, how many people can get benefit? 2, 3, 4, 5, okay, 100. So it's not enough. Why don't you let so and I mean what we are trying to hide? I mean, why shouldn't we try to negotiate with them? We can discuss that these are the ideas that are being discussed globally, and these are the issues that people are trying to highlight and explicate in their research work. When the people belonging to जो उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, जो पंजाबी और जो पश्तो कल्चर से हैं, hardly they know what is happening in English academics. For example, मैं अपनी किताब के if I start talking about when I wrote a title, लोगों ने कहा ये पीके की नहीं. People are not interested in going for such types of title, fiction, discourse, and cultural specialty, fiction, kalami, और सकाफती मकान. मैंने कहा चलिए और कुछ ना होगा उसको टर्मिनोलॉजी का तो है. So that's the meaning of. So in this way, they would be interested in knowing the difference between place and space. कि मुझे जिस जगह पे मैं रहता हूँ, उस जगह पे या रहती हूँ, मुझे वाकई place तो मिल गई, क्या space भी मिला? तो है ना? तो space is something acknowledgement and place is something that we already have. So हमारा space, we are more concerned postmodern, particularly postmodern era. We are more concerned with our spatiality, our space. कि हमें अपना that's what our Anglophone writers are trying to do. They have good places in UK and America, but what they are missing, they're trying to find out and show that is space. Yeah, and interestingly, like writers, the writers of Anglophone literature, particularly I'm talking about Pakistani Anglophone writing, that I think that they are actually inspired by their own tradition, and they're doing it for a purpose. And in fact, my next question is directed to Dr. Safir as well. That most of these writers of popular genre are getting recognition globally nowadays. Do you think that they are trying to challenge the Western popular genre that has conventionally been white and Eurocentric and based on Western mythology? Because we are actually talking about our indigenous folk tales. We're going back to our own roots. What do you think? What is the reason for their popularity, and in what ways they are challenging the so-called Western paradigm? Thank you. I'm sorry, I won't agree with your
are Anglophone writers, male and female. They are, bringing to light, bringing forth our local traditions, our local myths, or our local folk tales somehow. They are showcasing. I don't agree with that. Most of them are writing, to my opinion, they are writing to the order. Whatever is sellable in the West, they try to write that. And mostly these are the issues of, for example, women's rights in the Western hardcore feminist perspective from the feminist liberating agenda. And secondly, they talk about Pakistani society, for example, in terms of its various issues, particularly the extremist part is very much prevalent here, and it is there. There is no denying that. Actually, there is still space that we need to reclaim. We need to claim. And we need to, and your project in particular, can serve. The existing Anglophone writers are not, serving our purpose. They are not serving our myth. First of all, the tragedy is that Pakistan, since it came into being in 1947, we don't have a national myth. We need to have a national myth. And what is the need for a myth? This is very essential, because when there is no myth, of course, in the other sense, there are many myths, unfortunately, but myth in the sense of some creative and imaginative narrative, which informs the minds of the people and transforms them into social, human beings. That is something which is totally missing. You see, I was gauging your response, the audience's response when the speakers are using some local word, dada, dadi, nana, nani, so on, and you feel so very much, connected, and you have a sense of belonging with these terms. So this itself shows that even if I'm speaking in English, and this program is also conducted, this project will also be conducted in English, but still we are talking about a phenomenon that has been absent from our national narrative. अभी आप देखें पॉपुलर की बात यहाँ पे हो रही, तो पॉपुलर क्या है और क्लासिकल और एलिटिस्ट क्या है? यहाँ पे क्या उमैरा अहमद पॉपुलर नहीं है? पॉपुलर है, ठीक है? क्या हमारी ये जो नज्म है, चिड़े और चिड़िया, एक की चिड़िया एक चिड़ा, ज़ाहिर यही हो सकते थे और क्या हो? और चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना, इस तरह की चीज है, शायद मुझे इतना याद ना हो, और दोनों ने मिलके पकाई और दोनों ने मिलके खाई। इस सिंपलिसिटी में जो मैसेज है, क्या हमारे शहर के जो चिड़े हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, उनके नुमाइंदगी ये नहीं कर रहे, तो क्या वो इस कल्चरल इथॉस ऑफ बैलेंस एंड पार्टिसिपेशन, क्या वो इस पे यकीन रखते हैं जो इस तरह के नैरेटिव से निकलता है? I mean, most of us unfortunately are hooked by people like Umaira Ahmad, who are writing to the order of the establishment. मेरी जात जगह बेनिशान, आप देखना शुरू करें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे, ठीक है? आप जितनी किस्तें देखेंगे, हर किस्त में आप तकरीबन 15 मिनट आपके रोने में गुजरेंगे। वजह क्या है? यानी ये ऐसा नैरेटिव, और इस तरह के और भी, मैं नाम ही लेना चाहता हूं, बड़े पॉपुलर नाम इन दिस सेंस पॉपुलर, जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। मैंने आपको चिड़े चिड़ी वाली बात की है, देयर इज सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दैट. So such narratives are marginalized, and Umaira Ahmad is centralized. She is given such a privileged position in our, cultural spaces, in our media, and so on. मकसद क्या है? मकसद कोई खास आइडियोलॉजी इनकलकेट करना है, जो colonial आइडियोलॉजी ही है,
जिसकी बुनियाद पे हम चैलेंज करते रहे that why Hamlet had been made part of the syllabi in all the colonies, British colonies, because Hamlet promotes a certain ideology of fatalism. Let come what come, give ideology. The readiness is all, and there are वो sparrows और वो stars की बात करता है कि there is something in our stars. Brutus जिसकी बात करता है, something is wrong in our stars. So these narratives wean us away from praxis and from action, and they just make us contented. क्योंकि जो contentment का idea है, किनाब को जिस तरह जुमे के खुतबों से लेके और मेहर अहमद के नावलों तक जिस तरह प्रमोट किया जाता है, वो क्या है? वो ये है कि हम साकिन रहें, हम किनाब पसंद रहें और हम कुछ करें नहीं इस ऑर्डर के खिलाफ जो एक्सप्लॉइटेटिव है, जो हमारे जो वैल्यूज ऑफ एक्शन हैं और जो एक पार्टिसिपेटरी जमहूरियत को प्रमोट कर सकते हैं, ये जो हमारे लोकल लिटरेचर, मतलब किपलिंग ने एक बात की थी कि एज लॉन्ग एज किपलिंग क्योंकि जहां का बाई प्रोडक्ट, एंड आई रोट माय पीस, तो किपलिंग ने बात की थी कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ सिंगल मॉर्सल ऑफ ब्रेड इन इंडिया, इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल। क्योंकि वो किसी लोकल मिथ से निकला। किपलिंग जो प्रोडक्ट है, जो नोबेल प्राइज विनर है पहला 1991, उसकी आप इस बात पे गौर कीजिए कि वो उसकी परवान हमारी इस मिथ से हुई, उसकी परवान एंग्लो सैक्सन मिथ और जो नॉर्थ मिथोलॉजी उससे नहीं, ठीक है। So this is very important. So first of all, we need to understand the importance of the indigenous and the local, and this project is about that. मतलब आपने जॉनरा की आप बात कर रही हैं, यानी शायद बहुत सारे आप में से वाकिफ रुकैया सखावत हुसैन के नाम और उनकी मतलब शॉर्टेस्ट शॉर्ट स्टोरीज सुल्ताना ड्रीम आप में से कितनों ने पढ़ी? और आप देखें लिखी कब हुई है? कॉलोनियल एज में 1913 में या 1905 में काले उसने ये लिखना शुरू की उर्दू में, और नहीं इंग्लिश में, बल्कि शी वाज एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, सो एंड दैट वाज ट्रांसलेटेड लेटर। तो उसने जो एक आइडियल वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय विमेन, जिसमें men are not slaves like women are slaves in the real world now. There men are not slaves, but that world is controlled and run by women. और उसमें जो साइंस की सारी इमेजिनेशन है, मतलब I put that as one of the prime examples of retrofuturistic fiction. कि जो predictive है, I mean she was able to predict about our, post-human futures. And maybe because now people are talking about that post-man world. कि आप लोगों के जो chromosomes हैं, उनमें इतनी खराबी हो रही है that one day you will disappear. And this other chromosome, which is stronger, that is gaining force biologically and psychologically, and the time will come when. So we are imagining a kind of world about which Michael Belpic, the French novelist, एटमाइज का राइटर, एटमाइज कहाँ पेंड होता है? एक सेंटेंस पेंड होता है that the future is imminent, and I have, on the basis of that, I have given a PhD project also. Someone is working on that. That actually can we imagine a future without men? Because in their narrative, in their popular genre, this is very much being imagined. This is a real possibility that the future world in some future time, it would be like that. So where are we in all that? We are still hooked, and we are still, fed on the fodder of identity politics. The post-colonialism in शुरू में नहीं किया यहाँ पे जैसे भाई, so we are guilty of that. But now I am fed up with that, and I try to wean away my students from that, identity politics, and I try to bring also. And therefore, I'm very much happy that Islamic University once again is leading, and particularly its Department of English is leading in envisioning such projects which can bring,
some social and cultural change in this society. I have one proposal, and perhaps in one of your questions, I'm sorry to answer this question in advance. You have asked what role English departments, the departments of English can play. This is very important question. As I said in the beginning also, that we are becoming the dinosaurs of humanity, English departments, because people raise questions that if, for example, from tomorrow or someday in the future, English is no more our official language. English is no more the language of our culture, our newspapers and our Anglophone fiction and so on. Where will all of you go? आपको तो रोजी रोजगार भी नहीं मिलेगा, आप करेंगे क्या? So here is a solution, and a project has been submitted through NRPU to AGC. I'm afraid it will take to win, but this is something which an institution. Now you have one of the authorities here sitting on. So, and he himself is from English studies discipline. Therefore, perhaps he and the project lead can also appreciate this. What you can do, what we can do. Very simple. जैसे अभी बात हो रही थी नजीब आरिफ साहब ने की, that we can turn our stories, our folk tales, our local myth in whatever form it's available. We can, make short films about it. और इसमें एक चीज आप और याद रखिए, that when I said that we lack myth, because unfortunately we have started our identity since 1947, and unfortunately that rich legacy that we have left in the past, we have given all that in a platter to India, which is exploiting from all those myths and all that rich cultural heritage of thousands of years. मतलब आप में से कितने बच्चे हैं हमारा अहमद के पढ़ने वाले जिन्होंने बहाव को पढ़ा है, मुस्तंसर हुसैन तारक को पढ़ा है, 8000 साल हिस्ट्री को ट्रेस करता है, मेहरगढ़ का नाम आप में से कितने ने सुना है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, मोहनजोदड़ो और ये सारी बातें इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज वेयर मिथ इज, बिलीव मी, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू रिट्रीव फ्रॉम हिस्ट्री. And when we will associate ourselves with that history, and we will retrieve that lost myth in the myth history, as they say, from that, and when we will retrieve that, believe me, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी पर्सनल और मुल्क की भी, आपका रोजगार भी उसके भी कई आपको मौके मिलेंगे, और हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है जिसको आज तक हमने सिर्फ भाभा और सईद और वो जो होली ट्रिनिटी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म है सिर्फ उनके एंगल से देखा है, उससे आगे निकल के हम अपनी आइडेंटिटी को वाकईतन अपने नैरेटिव्स के जरिए से by turning them into visual narrative, because we are living in these post-industrial communication systems today. Therefore, we can actually gain that space, and we can put our own culture into the mainstream of the global culture. Thank you. You for responding to the questions in advance, but I think we have lots of questions and I can go on and on, but we should pause here and we can have a few questions from our audience. Yes, please. Yeah. Before we take questions, I would like to thank,
I would like to thank Dr. Ayaz Afzal, our VP Academics, for joining us today for this session. Thank you so much for this relationship with Dr. Ayaz. He's more than, VP to us. He's our teacher. I think he's my teacher. He's a teacher of my student's students. So thank you so much for having me. Thank you so much. We've just encapsulated kind of an overview by Dr. Najeeba Arif about domestic storytelling with grandmas. We've talked about nannies and daddies telling stories. And somehow those stories being filtered through a masculine lens, which is very pertinent observation. I have a different question. My question is that even when we analyze these traditions of domestic storytelling, we notice that there's a greater focus on romance, like you highlighted, or on betrayal and gyms, right? What do you think accounts for this focus on betrayals or romance? What kind of psychological substratum does that tap into this particular focus, romance or violence? Yes, who would like to respond? Yes. Yes, there is an undeserving, you can say, misplaced kind of emphasis on this romance, because as number one, we are very romantic people. And हमारे यहाँ जो कहानियाँ हैं, ये राजा कुश्ती और ये सारा जो रिवायत है, वो बड़ी स्ट्रांग है। फिल्में भी बनी हैं इसके ऊपर, पब्लिक इमेजिनेशन में बहुत उनकी प्रेजेंस जो है बड़ी लाइट रहती है। बट ये सारी नाकाम शादियां जो हैं, उनमें जो पोटेंशियल होता है कि वो ही राजा की कहानी क्या ना हो सके शादियां, तो वो भी कोई इसका नतीजा कैसे ऐसी कहानी में अब भी निकलता है। और वो लेकिन पुलिस फाइल में लोग उनको अभी भी किसी अंदाज में लिखा है। दूसरी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि सिर्फ जिन और चुड़ैल और ये हमारे नैरेटिव पढ़ने की उतरने जरूरत। मसलन जैसे मैं आज कर रहा था कि बहाव की पारोशनी जो उसका सेंट्रल कैरेक्टर, आपको में से कितनों को मालूम पारोशनी दरअसल दरिया का नाम है, और किस दरिया का नाम है? दरिया रावी का। और बाकी भी सारे दर्जा है उनके जो वैदिक नाम, आप उनके पीछे जो एक कितनी रिच मिथ और हिस्ट्री मौजूद है, वो हम कितना जानते। मतलब मैं बहाव का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, और भी इस तरह की टेक्स्ट कि उसमें उन्होंने जो प्री आर्यन हिस्ट्री, जो प्री आर्यन कल्चर्स और लैंग्वेजेस उनको ट्रेस किया, और उसमें जो मिथिकल कैरेक्टर्स, मतलब मामन मासा उसमें एक कैरेक्टर है, उसमें डोरगा एक ऐसा कैरेक्टर है who goes to confront a black wolf in the jungle, and the black bull is the symbol of local indigenous colonialism. और वो जिस तरह इनकी लड़ाई दिखाता है, मतलब ये यकीन की ये जो लैटिन अमेरिकन और जो वेस्ट है, वेस्टर्न यूरोप, इसमें और रूसी वगैरह, ये सब जिन्होंने मैजिकल रियलिज्म का एक तरह से ठेका उठा रखा है, जब वो समझते हैं कि वो उनकी इन्वेंशन है, बिलीव मी इट्स रॉन्ग। Our own writers from in our Pakistan, Goshaba for example, हम अजार की कहानियां आते हैं, और ये मैं आपको तारक के नावल का हवाला दे रहा हूँ। आप हैरान होंगे कि मैजिकल रियलिज्म के इन्वेंटर्स हम हैं, या हमारे आबाओ अजदाद हमसे इस रिवायत में जो लिखने वाले हैं, उन्होंने तारक। तो ये नहीं है कि हम जो है ना एक misplaced some emphasis है only on romance। मुमकिन है जो बहुत ही सतही इमेजिनेशन है उसमें ऐसा हो, लेकिन हमारे मिथ को इसी तरह की प्रोजेक्ट के जरिए से अनअर्थ करने की जरूरत है, ताकि हम बता सकें कि जी नहीं, हम सिर्फ उस तरह के चीप रोमांस वाले मिथ की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसमें बहुत खूबसूरत मैसेज और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें, तो जो रेजिस्टेंस आपको अपने मिथ और हिस्ट्री और इस लिटरेचर में लोकल में मिलेगी, वो यकीन करें इन पोस्ट कॉलोनियल राइटर में भी।
और उनकी जो अनफॉर्चुनेट उनकी एंडिंग है वो किसी हद तक दुरुस्त है और किसी हद तक जब चीजें मिक्स बन जाती है तो वो फिर उसमें लोकल लोगों के जो अपने इलाके हैं वो होते हैं, वो उसको हम 100% ट्रू नहीं कह सकते। जैसे हीर का अपना कैरेक्टर यानी जो एक किरदार पोर्ट्रे हुआ है उसमें लोकल नैरेटिव उसके बारे में लोग हैं। खुद हीर के बारे में यानी कि अभी तक एक मौजूद है बात कि हीर का जो किरदार है वो ये नहीं है जो पाकिस्तान में पेश किया गया। ओरिजिनल जो उसका कैरेक्टर है वो एक बड़ा एक और तरह का किरदार है जो बड़ा किसी इलाकाई बिरादरी की दुश्मनी की वजह से बदनाम करने के लिए तैयार व्यक्ति का नाम दिया गया और इस तरह से। तो ये लोकल नैरेटिव से कई होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी, पतित है मुझे साथ इतना, लेकिन इससे हमें वो रेजिस्टेंस लोकल रेजिस्टेंस इसकी तरफ करने इशारा किया है। चिट्टी चादर ला सट कुड़िए पहन फकीरा लोई, चिट्टी चादर ला सट कुड़िए पहन फकीरा लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई दाग न कोई। स्पेसिफिकेशन का एक तस्वीर है उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है कि ये वो जो पाकिस्तानी का एक वर्ड एक तस्वीर जो बनाया गया है इसको तुम उतार कर अगर तुम्हें अपने महबूब के पास पहुंचना है तो इससे मामला हो जाओगे दुनिया क्या कहेगी और दाग क्या लगेगा, जिसके लिए तुम अपनी कोई पुरानी लोई ले लो जिसके ऊपर कोई दाग नजर ना आए इसके तक। तो ये जो एक तस्वीरात है हमारे, ये जो मैंने सुबह भी बात करते इसके आवाज में भी बात की डॉक्टर साहब को तुम्हारे साथ चलिए काम के साथ उसने भी यही तस्वीर पेश करी कि मैं बात कर सकता हूँ उसमें वादे नहीं कर सकी। उसने भी मेरी बात कही थी कि जो हमारा उर्दू अदब से जितने नॉवेल है जितना फिक्शन है उसमें मुझे तो अभी तक मेरे जो नाकिस मुताला है उसमें अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग किरदार बहुत कम नजर आया है। कुछ किरदार ऐसे हैं जो बाद 1930 के बाद हैदर के हाजिर वो भी किसी हद तक जाकर पैसे हो जाते हैं। आप मुफ्ती साहब के किरदार देख लीजिए इजाफा का तस्वुर है किस कदर पैसे या रूहानियत के तस्वुर आपके साथ औरत जुड़ रही है जाके वहां पर वो बिल्कुल सरेंडर कर रही है या जिस तरह तकदीर का एलिमेंट है कि सब सितारों की गर्दिश है और फिर रोटी रोटी भी वो औरत जो आपको मेरा अहमद के यहाँ नजर आती है जिसको आप बड़ा एंजॉय करते हैं। और उस पर मैं सिर्फ हसीना मोइन का एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ देना चाहूंगी गुफ्तगू का जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया। किसी ने पूछा मेरे जैसे बंदे ने के लिए कि आप क्यों नहीं लिखती, ये सारे लोग लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे कहा गया है कि आई एम इररेलेवेंट, मैं आज के दौर के साथ इररेलेवेंट क्यों इररेलेवेंट औरत को पैसे नहीं दिखा सकती। हमने अपने दौर में तन्हाइयां जैसे कामों में पढ़ी लिखी औरत जो जॉब करती है जो सफर उसके अपनी जिंदगी की मिजरी के साथ लड़ना चाहती है, हमने उस जमाने में ऐसी औरत को जो है वो पेश किया है और आज के दौर में जो है वो हमें पीछे धकेल कर तो वहां पर एक ऐसी औरत है जो मार खा रही है जो मार खाने को अपनी तस्वीर समझ कर सरेंडर कर रही है। तो ये जो हमें वापस लौटना है अपने माजी की बात याद करनी है उसे दोबारा से सामने लाना है, उससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी अपनी दादी से सेवा गाइड जिसका मुझे अभी तक ओरिजिन नहीं मिला कि वो पता नहीं कहाँ से आया या सुना होगी, जिसमें तो एक पुरानी कहानी सौदागर जैसे शादी करके तो वो चला जाता है और जाते हुए अपनी बीवी को एक निशानी के तौर पर एक छल्ला मुंदरना उसको कहा जाता है, मुंदरना और एक रुमाल दे जाता है। अब वो सफर पर गया है और कई साल तक आया नहीं, पीछे बच्चा हो गया, बच्चा जवान हो गया, तो वो अपने बाप से उस माँ की महसूमी का इंतकाम लेने के लिए ऐसी ऐसी गेम्स बनाता है जिसमें हर दफा उस बाप को सजा का सामना करना पड़ता है किसी भी शरारत के तौर पर। उसको सेवा राइट से सेवा हो रही है, तो उस पर वो कहते हैं कि ये कौन है और फिर वो जब तलाश करता है कैरेक्टर कौन है तो वो मुंदरना निशानी के तौर पर सामने रखता है। तो यहाँ मर्द और औरत अलग अलग जंग नहीं कर रहे ना कोई जो बुराई थी, बल्कि वहाँ पर बड़ा एक ऐसा मौका जो बराबरी की तरफ है। To leave about at 1:30. So, okay, just really one question. Yeah.
Okay, we can take just one question, please. Very quickly. अगर ये सेमिनार में डेट है तो मेरे ख्याल में ये रिसर्च AHRC के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल में हम इन कहानियों से इनको अपनी बुनियाद मतलब अपने वीकनेसेस बता रहे हैं और हम अपनी बुनियाद इनको बता रहे हैं क्या इनका हम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा मतलब फ्यूचर में कोई इसका बताने का अपनी मैं इसका छोटा सा जवाब इनको देता हूँ। ये आपकी बात सुनो बेटा, आप बात सुने बेटा, आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें जो खराबी है वो ठीक करने की जरूरत है। और वो ये है कि अब तक ये होता रहा है और हम अपने अंग्रेजी लिटरेचर वाले जहाँ ज्यादा बैठे हैं, उर्दू वाले भी किसी हद, लेकिन अंग्रेजी वाले खासकर इसकी जिम्मेदार है कि हमने हमको हमेशा अपनी वीकनेसेस बताई। हमारे माशरे में ये खराबी है, वो खराबी है, औरत को मारा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट थॉट है वगैरह, हम ये बताते रहे। ये प्रोजेक्ट इसलिए है कि हम उनको अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं कि हमारे कल्चर की बुनियाद जो है वो चीजें हैं और हम इस प्रोजेक्ट और इसके नतीजे में जो कुछ इंशाल्लाह कहानियां और चीजें सामने आएंगी हम अपनी स्ट्रेंथ्स बताएंगे। Running out of time, so I'm sorry, but we'll have to end the question and answer session over here because the buses have to leave. I think Dr. Satir made a very pertinent point that this is about, this topic is about co-grounding a positive cultural identity for our nation, which is something we normally do not do. So just to conclude the academic part of today's session, I would now like to invite Dr. Ayaz Afsar to come and to address the audience. And before he comes, I just want to, quickly make a personal introduction. In a professional sense, we would say he is the VP Academics of our university. But on a personal level, he taught me research methodology. So, today it's in great part due to Dr. Ayaz's contribution. So I invite Dr. Ayaz to please come and address the audience. First of all, I would like to thank all of you and the Department of English that they invited me and provided me the opportunity to talk to you. Though when I got this invitation, I was not thinking what I was just thinking what I would be able to say about this topic because I wasn't making anything out of it. I was thinking that was rather a different matter. Anyway, I'll come to that. I'm also representing here our president, Dr. Hazal Mahmood Al-Fayli, who is out of the country, otherwise he would have come to address here. And I would like to thank our guest speakers over here, Professor Satir Rawan, Director Academic, National University of Modern Languages, and all-around Dean Faculty of Language and Literature, Professor Dr. Mujiba Arif, and Head of the Department, Dr. Umaira Ishfaq, and Dr. Farooq Muji, and our guest speaker, Dr. Abdul Wajid Tabassum from Alama Iqbal. I've been introduced to see in different ways, and I don't know what to say after that such an introduction. That you would be thinking that I was just thinking that so many generations they have mentioned that I have been.
My colleague, Dr. Safira Bhan, has been our colleague here at the International Islamic University. And sometimes he actually made me to teach post-colonial literature, though it wasn't my job. But when I came from UK, and said, yeah, you can teach anything and you teach, and I taught it for a couple of semesters, maybe 2 or 3 semesters. And thank you very much for making me to read UK Baba and Japanese people and Edward Said and others. I wasn't actually interested. I knew Edward Said, but not other people. And that is basic what I learned during teaching that post-colonial literature. Movie ke Bhava seemed to be so difficult, and you would agree with me that it's convoluted language and philosophy and hybridity and that type of mimicry. And I gradually developed some interest in it. But I had always an argument with all those people who introduce and still promote that post-colonial literature, and post-colonial literature itself has become a huge discipline with many different branches of it. But I have always been, and when I came, you see, Dr. Safi was talking about what should be the function of English literature. And there we have a lot of discussion in different forums, and with Dr. Safi and Dr. Rusa, that I'm a traditionalist, a classical approach. And I still believe that if you are studying English literature, it should be English literature, or you need to change its style, which would be English studies, Pakistani literature in English, whatever you call it. But when you claim to be professor of English literature, we undertake English literature, literature that was produced in English and later on maybe joined by other native English-speaking scholars. Where you have talked about this general category that you talk about the myth and the folklore and the narrative, and it is in every culture. Okay, I recall you see Ronald Barthes' statement that it has been in every culture, primitive or modern, and it is a narrative is a way of telling about your identity, everything in it. So there can't be any culture that is primitive. The most primitive, you will find the basic element that is a narrative, that's a story. And it is rather, what we say, homo narrative. That is the way human beings communicate. So can you imagine any society, whether it is post-modern or most primitive that they wasn't? We have in every form there is a narrative. And those forms could be in the form of myth, that could be in the form of novels, that could be in the form of poems, different words. I started with that this title was rather confusing for me, mapping Indigenous Pakistani popular genre. Because genre has different meaning in different contexts. Genre is specifically in literature, we say literary genre. Otherwise, what I would say that Pakistani literary popular genre could make a sense. Because we say sonnet is a genre, it has its own features, characteristics, which make it it should have some definition and that kind of thing. So it was a bit confusing, and I'm not criticizing. I say that this title was confusing. Then I thought that how it is a Pakistani, what the references you are giving, what I have overheard, that about the Sasipuru, that he Raja, are the Pakistani? They were for centuries, and maybe that was produced in that geographical boundary where you call Pakistan is now, but Pakistan was created in 1947. But these stories have been from time immemorial. So in that sense, to call it a Pakistani answer. Anyway,
I know that you have to leave and you are not here to listen. But today, I will say, today is the 9th of December. And you recall that 1608, who was born is a great British poet? Who was? I'll give you one of the lines. He wrote, "Peace has victory. Peace has a victory. No less renowned than war." Talk about peace and war. And he also wrote, "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely, according to conscience, above all liberty." So it can go continue, but I will not abuse, especially the welcome they have given me by taking much time over here. Okay, with my lengthy oratory. I'm actually conscious of the same. Maybe now you remember that. You also know that they also said, "Whom we stand and wait." And while you are sitting, not standing, you shouldn't be captivating. Okay? So let's go. And with this one, that the name was, you would have got, that was John Milton, who was born on 9th of December. And I have read a few lines for that. With the last one, I will. Okay, thank you very much for it. For your insightful remarks. Okay, a lot of you were disappointed that you could not ask questions. Unfortunately, due to limitation of time, we had to stop the session. But as I mentioned earlier, this is the first of a series of seminars. So we hope that you will join us in future, and then you'll have an opportunity to ask the questions that you want. And okay, so to conclude today's ceremony, I would like to invite Dr. Ayaz to please distribute the shields as a token of appreciation to our speakers. So, and before we do that, if Dr. Ulisa wants to give a vote of thanks. Okay, thank you so much, Dr. Ayaz Afsar, for your arrival at the opening session of our project. And I look forward to seeing you in our forthcoming events too. I would also like to thank our wonderful panelists for their valuable contribution to our seminar. My deepest gratitude goes to all of you for taking time out of your busy schedule to attend this session and make it a successful event. I would also like to thank my organizing team, Dr. Amal Sayed and Dr. Asman Soon, for their support, and this event would not be possible without this teamwork. So thank you both. And last but not the least, I'm extremely grateful to Dr. Husnul Amin, Executive Director, Iqbal International Institute for Research and Dialogue, and his team for hosting this event. The facilities provided by your institute were excellent, and the support by your technical and administrative staff was outstanding. Their professionalism and efforts, they've made this event a success. Thank you once again. So I'd like to invite Dr. Ayaz Afsar and Dr. Arusa Kabul, if they could please come down from the stage, and perhaps we can have the shield distribution ceremony in the space in front of our chair. Okay, so I think we can have the distribution ceremony on the stage. So I'd like to first invite Dr. Safir Awan to please come and receive the shield.
I'd like to next invite Dr. Abdul Aziz Tabassum to please come. His shield. Dr. Iqbal. Dr. Atul to complete the shield. I'd like to request Dr. Arusa to please give us our shield as a token of thanks to Dr. Ayaz. I think yes. Okay, this brings us to the end of today's session. I'd like to thank you all for taking out time and joining us. I hope it was a productive and interesting session for you. And I hope you will join us. And before you leave, do not forget to take tea. We have made an arrangement for tea. Hello, everyone.